Hello everyone. This is the second part of pollination, and in this video, we will be talking about agents of pollination. So, broadly speaking, there are two agents of pollination. So, agents of pollination का मतलब होता है it means the things that in pollination. तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दो एजेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक. एबायोटिक मीन्स विच आर नॉन and biotic means which are living nature. तो biotic में जो है there are three: entomophily, ornithophily, and chiropterophily. Entomophily means insect pollination. That means the flower that are pollinated by insects. Ornithophily means bird pollination. जो flower bird के जो pollinate की जाती है, जो bird के pollinate करने में. And chiropterophily for the flowers that are pollinated by males. So this is biotic agents of pollination. Apart from this, two abiotic agents of pollination are anemophily and hydrophily. So anemophily means air or wind pollination. Means the flower which are pollinated by wind. Whereas hydrophily, as the name says, hydro means water pollination. The flowers which are pollinated by water. जो फ्लावर वाटर पॉलिनेशन है उनको हाइड्रोफिलस कहें और उस पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहें. वैसे ही जो फ्लावर एयर पॉलिनेटेड होंगे उनको एनिमोफिलस फ्लावर कहेंगे. The type of pollination is anemophily. Anemo means air, phily means love, यानी air loving कह सकते हैं. तो phily का मतलब होता है क्या है. So hydrophily means water loving. तो जो flower which are pollinated by the water, hydrophilous water, by entomophily, ornithophily, and thermophily. So let's start with. So first is anemophily. The flower which are pollinated by air, they are known as anemophilous flower, and the pollination is known as anemophily. तो ये क्या होते हैं? It is अगर बाय यहाँ पर जो फ्लावर जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जैसे कैलिक्स का रोड होता है उसमें they are not shown. बहुत ज्यादा रेड कलर की नहीं होगी, बहुत ज्यादा सेंट नहीं होगी, कोई वाली नहीं होगी, ठीक है, because they do not have tracks, right? क्योंकि आप जैसे फ्लावर आपकी ऐसा ही जैसे ह्यूमन का होता है कि वो फ्लावर ज्यादा सुंदर दिखेंगे रेड कलर में फ्रेगरेंट फॉर्म जनरली ज्यादातर इंसेक्ट विजिट करेंगे अट्रैक्ट इंसेक्ट, बट बिकॉज दे आर पॉलिनेटेड बाय एयर, इनके जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स मतलब जिनके नॉन एसेंशियल ये जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं दे आर नॉट शोन. ऐसे कोई रेड कलर ब्राइट कलर नहीं होंगे, कोई सेट भी बिकॉज दे डू नॉट हैव टू गिव एनी रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड नहीं होगा. Stigma and anthers are exerted. Exerted means they are exposed or they are outside. Exposed भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए. जैसे आप ये देख रहे हो, these are a lot of styles which are coming on pond plant. और ये इसका stigmas है. तो इनके जो stigmas है and हो सकता है they are exerted or exposed so that just to go like get easily catch the pollen and so they can easily release the pollen into the air. Then pollen grains, they are dry or small, छोटे छोटे होंगे, dry होंगे, non-stick या bendable होंगे ताकि जो wind है वो easily catch कर सके, इसलिए सब हो जा सके. Stigma something right here you the feathery you the and prior to catch pollen pollen catch करेंगे. It is ground. ज्यादातर जितने भी आप इसमें फ्लावर्स देखोगे उनके अंदर एक ही ओवरी होगा, एक ओवरी होगा. देयर इज अगर ऐसे ओवरी है तो देयर इज अ सिंगल ओवरी, यू नो, वन सिंगल ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें वन सिंगल ऑप्शन. और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं दे आर पार्टिंग, यू विल नॉट फाइंड अ सॉलिटरी फ्लावर ओवर हियर, बट यू विल फाइंड कॉम्पैक्ट फ्लावर्स पैक्ड बहुत सारे फ्लावर्स जो एक ही गुच्छे में. तो इसके एग्जांपल्स होंगे सिया मेज. सिया मेज इज द साइंटिफिक नेम फॉर मेज. मोस्टली grasses जो होते हैं they are pollinated by paper because you have seen that grasses does not have that showy flat ये तो सुंदर सुंदर
So the reason was they get pollinated by mulberry, means apple, date palm, khajur, and one more, that is cannabis. ठीक है, cannabis. So these are the plants that are pollinated by air, and these are the characteristics. So let's look for hydrophily. Now hydrophily में क्या होता है? Hydrophily means water pollination, and the plants that are pollinated by water is hydrophilous. Flower कैसे होंगे? They are inconspicuous, small, colorless, nectarless, odorless. Again, same thing. Because यहाँ पर भी they will not attract any insect or a bird, anything. तो attract नहीं करने से फिर से ये जो long distance flowers होते हैं, such a colorless होंगे, colorless होंगे, small होंगे, उसमें कोई nectar नहीं होगा, कोई smell नहीं. So that's why they are odorless. Odorless means they don't smell. Pollens कैसे होंगे? They are small, lightweight, बहुत हल्के से, non-sticky, coated with the wax and reproduction. मतलब क्या होगा? रीजन है कि why they are coated with the wax, because जब water pollination वगैरह होने लगती है through reproduction stratum, because we crab and decay in general, that's why the pollens and even the plants they are coated with the wax pollination. क्योंकि wax से वो coated होते हैं, so that they won't decay in water, and their shape is different this type, because this type of shape will easily able to sway or flow into the water. Unwettable sticky stigma. So stigma again because it is coated with the wax and it is sticky, so that it can easily catch the pollens. Pollens are water. दो टाइप की हाइड्रोफिली होती है, एक हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली. हाइपोहाइड्रोफिली मींस अंडर द वाटर, पानी के नीचे, जो जिसमें एग्जांपल है सिराटोफाइलम, मैचस एंड जोस्ट्रेम. ठीक है. Whereas epiHydrophily that takes place in Vallisneria. मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, इट इज फॉर Vallisneria. तो Vallisneria में क्या होता है? दिस इज अ मेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर, एंड यहाँ पर आपको जो पिंक कलर दिख रहा है दैट इज अ फीमेल फ्लावर. तो इसमें क्या होता है? द फीमेल फ्लावर, ये जो स्टेम है, इट ग्रोज द स्पाइरल होके वो टॉप पे चली जाती है. उस ऑन पे द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द दिस वाटर, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के पास निकल जाते हैं. जो मेल फ्लावर है वो पॉलन रिलीज करता है अंडर द सरफेस, बट दीस पॉलन देन ग्रो ऑनटू द सरफेस. ये फिर ग्रो होते हैं सरफेस पे बचाते हैं, एंड देन दे ग्रो टुवर्ड्स द स्टिग्मा. अब इस केस में क्या हो सकता है कि वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर हवा के थ्रू भी जा सकते हैं, या कोई इंसेक्ट है उसको बॉडी पे चिपक के भी जा सकते हैं, बिकॉज ये ऐसे अबव द वाटर सरफेस, पानी के ऊपर हो रही है. तो Vallisneria में क्या है कि it is epiHydrophilous form, that means the pollination is taking place above the water surface. और so the female flower top पे रहता है, water पे रहता है, और male flower पानी के नीचे रहता है, और pollination करता है पानी के अंदर ही, अंदर इसका range grow towards the surface of water. surface में जाते हैं बनते towards the female flower और उसमें जाके pollinate करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर नॉट ओनली एयर, नॉट ओनली वाटर, एयर इंसेक्ट पॉपुलेशन भी हो सकती है इस केस. इसीलिए अब यू कैन सी दैट्स व्हाई ये पॉलन बिकॉज़ दे आर रिलीजिंग टू द सरफेस बाय द मिल्क. इसीलिए अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो हाइपोहाइड्रोफिलस होते हैं पानी के नीचे जो पॉपुलेशन होता है, उस केस में सिंपल सा क्या होता है कि इफ दिस इज अ and there's another, and there is यहाँ पर एक मेल मेल फ्लावर, और ये वाला जो दिस इज द फीमेल फ्लावर. इस केस में क्या होगा? दिस मेल फ्लावर इट रिलीज इट्स pollen into the वाटर में, पानी में रिलीज कर रहा है. पानी में ही जो पॉलन लेंगे दीज स्टिग्मा, पानी में स्टिग्मा में तब चाहिए. सो दैट्स व्हाई देयर शेप जो है, उनकी जो शेप होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. उससे से दैट शेप कह सकते हैं कि वेल लाइक स्टिक की शेप एंड वो इजीली पानी की जो स्वेप होते हैं स्टिग्मा तक जा सकते हैं.
get damaged by water currents. So water currents which is no damage, no किसी और direction में चले जाए. That's why their shape matters a lot. In this case, they have repulsion. So this hydrophilus takes place in exhausted. जो epihydrophilus. Now let's talk about the entomophily. Means flower which are pollinated by insects. So insect pollination. अब क्योंकि उनको insects को attract करना तो you can see the flower color. So flower color, it is bright. Flower are very scented and fragrance. ज़्यादा खुशबू भी and even because of जो insects हैं वो उनको pollinate कर रहे हैं तो वो usually बहुत in form of reward they will give them nectar. In this case, we have nectar. The flower produces nectar, which attracts pollinators. Flower fragrant, bright color. Okay. Pollens spiny, heavy, so that they can stick to the surface of the this insect. उनके body के चिपक जाए. That's why they are spiny, surrounded by yellow substance, called pollen gate. जो pollen के इस side में कुछ yellow ऐसे substance it, which is made of lipids. It is made of lipids. And example is sunflower. अब इसमें क्या होगा? Most flowers are pollinated by bees. Bee pollination होती है. There are few that are pollinated by flies. The flies जो flower pollinate करते हैं, जो smell होते हैं, they are full smelling. उनकी smell like rotten just whereas जो bees pollinate होते हैं बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस तो इंसेक्ट्स में भी मोस्टली bees मल्टीप्लाई करती है पॉलिनेशन फ्लाइज भी करती है फ्लाइज जो फ्लावर्स होते हैं फॉर स्मेलिंग their smell is that is very bad like insects just bees are pollinate smell बहुत अच्छा people who got flowers and pollinate so next is ornithophily. Ornithophily means pollination. These flowers are pollinated by birds. That's why this flower also known as ornithophilous flowers. Situation the picture birds pollinate with flowers. So pollination is done like that. Our flowers कैसे हो सकते हैं? Their corolla shapes can be tubular. This type of tubular flower have this tubular shape of so that the bird can insert their beak into this tube. वो easily tube के अंदर अपने beak को insert कर सकते so that they can suck on the nectar. This nectar is kind of a reward for the bird. Bird के लिए reward है. अगर हम pollinate, so he needs some reward in response. उनको reward देते हैं birds के nectar और जो nectar होता है it is deep inside the bird. तो popular shape कैसे सकते हैं कुछ ऐसे tubular हो सकती है urn shape हो this cup shape हो सकती है callistomer यहाँ पर we have more like a cup shape ऐसे so they are cup shape and urn shape ericaceous और ericaceous we have urn shape तो ericaceous की form see the larger why so that is insert this structure. Larger flower के समय they are large size flower, large size, brightly colored, orders. ये ज़्यादा अच्छे से लग रहे हैं जैसे ऐसे अच्छे very beautiful figures. ये बड़े बड़े brightly colored orderless में सारा कुछ नहीं but they produce a large amount of nectar. But you know but also mislead Translation is nectar as a follower reward. Exactly. Stellies genus from the right side. So you can see this is a stellies and this is the sun. The sun it's the stellies. This is a flower which is from the right. The last one is Chiropterophily. Chiropterophily means bad pollination. Flowers that are अब क्योंकि रात में कोई छतरी के सप्लाई होता
Right? We can take something. So, flowers are darker, but their smell is strong for molting or fruit is very strong so that the bats can be attracted towards them. Nectar बहुत ज्यादा हो confidence बहुत ज्यादा. Flowers are fragrant. Example, Eden's Union, this is a part which is probably apart from this, there are other type of pollination. जो कि बहुत tough होती है, but there's a pollination in which the flowers are pollinated by snail. The snail pollination will Melacophily. Melacophily. Or example which is the Ericilla. Ericilla. So snail Melacophily. Then the pollination done by ant is Melacophily. And इसका example है rubies. This is ant pollination, ant pollination. उसके बाद snake pollination. अगर snake pollination करता है इसको कहते हैं Abiotic. और इसका example है sandalwood. That's all for today. Keep learning, keep learning. Sure, subscribe. Thank you.